Hello students, so we are going to start the exercise 1.1 of chapter 1 rational numbers. So the first question was using appropriate properties find, means we have to use appropriate properties and we have to find the answer of the questions. So there are two questions in this first question. The first one was minus 2 upon 3 into 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 into 1 upon 6. So let's solve this. So first we write the given question in solution. Solution minus 2 upon 3 into 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 into 1 upon 6. So the next step was we have to find the appropriate property. So in this we can apply a property which name is commutative property. See here we can put it in bracket as minus 2 upon 3 into 3 upon 5 plus 5 upon 2 bracket minus 3 upon 5 into 1 upon 6. Now we can take this to here because in commutative property a plus b equals to b plus a. So let's take here minus 2 upon 3 into 3 upon 5 minus 3 upon 5 into 1 upon 6 plus 5 upon 2. Here in bracket we have to write the property which we have used. So the property which we have used is commutative property. So we will write here commutative property. So the next step was here we can see that these two are same, 3 upon 5 and 3 upon 5. We know that in distributive property we have learned that x into y minus x into z equals to x bracket y minus z. So we will write here 3 upon 5, 1 minute, 3 upon 5 bracket minus 2 upon 3 minus, because here is minus sign, so these both are positive, so it will be positive and the minus sign will goes to 1 upon 6, so it will be minus 1 upon 6 bracket close and plus 5 upon 2. Here we will write the property which we have used is distributive property. So the property we have used is distributive property. So the next step was now we have to solve. So we will write here 3 upon 5 minus 2 upon 3 minus 1 upon 6. So the LCM of 3 upon 6 equals to 6. So we know that we have to multiply 2 times to get 6 in 3. So we will write here 2 minus 1 upon 6. 6 into 1 is 6. So it will be multiplied by 1. Bracket close plus 5 upon 2. So next we will write 3 upon 5 bracket. So the answer minus 2 into 2 equals to minus 4. So minus 4 upon 6 and minus 1 into 1 equals to minus 1 and 6 into 1 6. So bracket close plus 5 upon 2. So the next step will be 3 upon 5 minus 4 minus 1 upon 6 equals to minus 5 upon 6. So minus 5 upon 6 bracket close plus 5 upon 2. So these are the steps. So we will follow the next step. I think you have written till here, so I will rough. So the next step will be we have to multiply now 3 upon 5 with minus 5 upon 6. So we will write here 3 upon 5 into minus 5 upon 6 bracket close plus 5 upon 2 which had remained here. So in this we can see here are two rational numbers. In multiplication we know if it is able to cut with the same numbers, so it can be cut. So 5 will be cut with 5 1 and minus 5 will be minus 1 and 3 can be cut with 3 1 and 6 can also cut with 3, so it will be 2. So we get minus 1 upon 2
plus 5 upon 2. So we can see here that both denominator are same. So in rational number we know that the denominator should be same to subtract or addition or in addition. So minus 1 plus 5 equals to 4 upon 2. So 4 upon 2. And we also know that in rational numbers we have to make it in the simplest form if it is possible. So 4 upon 2 can have a common divisor which is 2. So 2 will be cut as 1 and 4 can be cut as 2. So the answer will be 2. So these are the steps of the first question. You can copy here. So now we will move to the next question. So the second question is given 2 upon 5 into bracket minus 3 upon 7 bracket close minus 1 upon 6 into 3 upon 2 plus 1 upon 14 into 2 upon 5. So we will solve this. So we know that first we have to write the similar question which has given in the question. So we will write here 2 upon 5 into minus 3 upon 7 minus 1 upon 6 into 3 upon 2 plus 1 upon 14 into 2 upon 5. Here we can solve this directly, but we have to find the properties. So first we will solve this first directly, then we will do the answer. So we get 2 upon 5 into bracket minus 3 upon 7 bracket close minus 1 upon 6 into 3 upon 2 plus 1 upon 14 into 2 upon 5. So we can put it in the box also. So we know that the property was commutative property. So now we will put it in the bracket. So like this, and write here commutative property. Commutative property. We can cut here 6 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, so 1, and so we will get 2 upon 5 into minus 3 upon 7 minus 1 upon 2, 1 upon 4, because 2 into 2 equals to 4, minus 1 upon 4 plus 1 upon 14 into 2 upon 5. So we know that according to commutative property a plus b equals to b plus a. So we will take this box first, then we will put minus 1 upon 4 after this. So we will write here 2 upon 5 into minus 3 upon 7 bracket close plus 1 upon 14 into 2 upon 5 bracket close minus 1 upon 4. Here we can see that these two are same, 2 upon 5. So according to distributive property, x plus y, x into y plus x into z equals to x bracket y plus z. So we will write here 2 upon 5 bracket minus 3 upon 7 plus 1 upon 14 bracket close minus 1 upon 4. We will write the property is distributive property. Which property? Distributive property. So the property was distributive property. So the next step will be, we have to solve this. We know that 7 and 14 LCM will be 14 only, because 14 is divisible by 7. So we will solve this. 2 upon 5 bracket close minus 3 upon 7 plus 1 upon 14. So we know 14 into 1, 14, and 1 into 1. So this will be 7 into 2, 14, and minus 3 will be also multiplied with 2. So we will get this, and after last minus 1 upon 4. So the next step, 2 upon 5 bracket answer minus 6 upon 14 plus 1 bracket close minus 1 upon 4. At last we will solve this. 2 upon 5 minus 5 upon 14 bracket close minus 1 upon 4. So I think you have written till here, so you can
match your answer, I will write the next step. So the next step was here it is in brackets means multiply, so we have to multiply this. So we will write here 2 upon 5 into minus 5 upon 14. This is bracket, so we put here bracket, and in the last minus 1 upon 4, so minus 1 upon 4. In multiplication we know that we not need LCM, we can directly multiply. Here the numbers can be cutted, so 2 will be cut with 1, so 2 1s are 2, and 14 will be cut with 7, so 2 7s are 14, and 5 can be cut with 1, and minus 5 can be cut with minus 1. So the answer we will get is minus 1 upon 7. At the last we have here minus 1 upon 4, so we will write here minus 1 upon 4. The LCM of 7 and 4 is 28, so we will write here LCM of 7 and 4 equals to 28. So we will write here 20. We will write here 7 minus 1, 7 into 4, 28. So minus 1 into 4. Minus 1 here also, 4 into 7 equals to 28. So minus 1 into 7. So we will get minus 4 upon 28 and minus 7. So the answer will be minus 4 minus 7 equals to minus 11. So it will be minus 11 upon 28. So this is the answer of this question. You can solve this by writing these steps. You can see once. Let's move to the next question. So the next question in this exercise was question 2. Write the additive inverse of the following. We know that the additive identity of rational number is 1. So additive identity of the rational number is 0. So we will discuss the answer. So the first question is 2 upon 8. So 2 upon 8 का एडिटिव इन्वर्स माइनस 2 upon 8 होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जो एडिटिव इन्वर्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है रेशनल नंबर्स का वो 0 है. सो इसका आंसर होगा माइनस 2 upon 8. सो वी विल राइट हियर माइनस 2 upon 8 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 upon 8. So it is the answer of first. Now the second question is given 5 upon 9. हमको मालूम है कि 0 आइडेंटिटी है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर. सो माइनस 5 upon 9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 upon 9. अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है माइनस 6 upon 5. सो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 6 upon 5 होगा. सो 6 upon 5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 6 upon 5. जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 2 upon 9. सो 2 upon 9 का ऑफिशियली माइनस 2 upon 9 होगा आंसर. तो माइनस 2 upon 9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 upon 9. लास्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का वो है फिफ्थ क्वेश्चन जिसका है 19 upon 6. सो 19 upon 6 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस 19 upon 6 होगा. सो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस 19 upon 6 है. तो इसका आंसर होगा माइनस 19 upon 6 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 19 upon 6. So let's move to the next question. You can copy here the answers. So the next question in this exercise was question number 3, which is given here. Verify that minus bracket minus x bracket close equals to x. मतलब अगर हम जो x का वैल्यू पुट करते हैं और उसमें 2 माइनस लगाते हैं तो क्या वो x के बराबर है. तो जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है
उसमें हमारा x का वैल्यू 11/15 है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो वी विल पुट दिस इन द सेम, सो इट विल बी माइनस ऑफ माइनस x ब्रैकेट ऑफ इक्वल्स टू x मीन्स माइनस ऑफ माइनस 11/15 bracket close equals to 11/15. We know that minus into minus equals to plus, which we have studied in standard 6th and 7th in integers. So it will be plus, so it will 11/15 equals to 11/15. Hence it verify, so we will put here, hence it will verify that LHS इक्वल्स टू RHS। तो जो पहला अपना क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। जो अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है वो उसमें x की वैल्यू -13/17 है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन माइनस माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट माइनस -13/17 bracket close equals to x means -13/17. So according to this we can see that there are three minus sign which shows that in minus into minus equals to minus, because minus minus plus, so plus minus equals to minus, so it will be taken as -13/17. So equals -13/17 equals to -13/17. So it's verified that, hence it verified that LHS equals to RHS, means this both questions are correct according to these questions. You can copy the answers. Let's move to the next question. So the next question in this exercise was question number 4, which is given, find the multiplicative inverse of the following. We know that the multiplicative identity of rational number is 1. So first you can see the example. तो पहले हम एग्जाम्पल देके आपको ऐसे ज़्यादा इजी लगे तो पहले एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसा अगर दिया गया है 14/9, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 9/14 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई करना। सो अगर हम इनको कट करें तो 1 1 1 एंड 1, सो इक्वल्स टू 1, मतलब जो इक्वल्स टू में आंसर आना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर आप कोई नेगेटिव रेशनल नंबर्स का देखें तो जैसे -14/9 इंटू -9/14, इनका रेसिप्रोकल होगा लेकिन जो साइन होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो इनको कट करें तो 1 -1 एंड 14 1 जा 14, सो -14 इक्वल्स टू -1। सो जो माइनस माइनस है उसका जो साइन है वो कट जाएगा और जो आंसर आ जाएगा वो 1। तो आप सब लगता है जैसे समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो रेसिप्रोकल भी है, दोनों सेम ही कहलाते हैं। और जो -1 और 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव मतलब उनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल कोई और नहीं हो सकता। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है -13। तो हम जानते हैं रैशनल नंबर कैसे होता है, P/Q में। तो P/Q पे हम Q जानते हैं जहाँ 0 नहीं होता, तो हम इसको 1 डाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन -13/1, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1 -1/13। जैसा कि हमको मालूम है कि इनका रेसिप्रोकल कर देना है और जो साइन है वो सेम ही रहेगा अपर में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -13/19। तो सॉल्यूशन -13/19 इक्वल्स टू -19/13, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है 1/5। सो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1, तो आंसर आ जाएगा 5/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th -5/8 इंटू -3/7। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। हमको मालूम है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मतलब मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर्स में हमको ऐसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। -15 आ जाएगा हमारा 56। सो -15/56 का रेसिप्रोकल क्या होगा -56/15। तो ये आ गया 4th का आंसर। अगला क्वेश्चन है -1 इंटू -2/5। तो हमको मालूम है P/Q, Q का वैल्यू 0 नहीं होगा तो 1 डाल देंगे यहाँ पे।
तो सोल्यूशन में आ जाएगा -1/1 इंटू -2/5। और ये भी मालूम है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स वी नॉट नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ द डिफरेंट नंबर्स, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सो -1 इंटू -2 इक्वल्स टू 2 and the answer is 2/5. So 2/5 equals to -2/5. So ये आ गया हमारा फिफ्थ का आंसर। जो अगला क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ, जिसमें है -1। सो -1 का हमने जैसे शुरुआत में डिस्कस किया था कि -1 और जो 1 है उसका एक ही रेसिप्रोकल, मतलब वो खुद ही रेसिप्रोकल है। सो जो इसका आंसर होगा ये होगा -1 इक्वल्स टू -1। सो ये था कुछ एक्सरसाइज का आंसर। आप लोग ये कुछ कॉपी कर लें आंसर, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गलती से इसका रेसिप्रोकल ही नहीं लिखा। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो होगा -5 नहीं, मतलब 5, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो 5/2 ये इसके आंसर है। तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं अगर आपने गलत लिख लिया हो तो।